तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि नॉमिनल एट्रीब्यूट्स का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला हुआ Pi is equal to P minus M divided by P, where P is the total number of attributes, M is the matching ones, right? And हमने एक एग्जांपल देखा था, कलर प्रेफरेंस, रेट मतलब एट्रीब्यूट्स हमने कंसिडर किया फोर: कलर प्रेफरेंस, फूड, स्पोर्ट, सिटी, और दो स्टूडेंट का ले लिया। उसमें यू कैन सी हियर दैट फॉर द कलर प्रेफरेंस and sport and city, these are the matching attributes for both students. This one is different. So formula will be what? M is 3, P 4. So P minus 4 divided by P, that is 4 minus 3 by 4, 0.25. So we have gone for this. Now, data science versus software engineering. Next questions. It may be means a kind of preliminary question that can be asked in an interview. But tell me the difference between data science and software engineering. So software engineering is deterministic, meaning same input always gives same output. समझ में आ रहा है? तो ये deterministic है। सेम इनपुट से आपको सेम आउटपुट मिलेगा। बट डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज प्रोबेबिलिस्टिक। ओके, डेटा साइंस इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड it means that output depends on the data pattern and uncertainty. यहाँ पे जो आउटपुट होगा पूरा डेटा पैटर्न और अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है। और आप देख सकते हो लाइक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कैलकुलेटर, जो जिसमें आप जो भी दोगे इनपुट उसके अकॉर्डिंग, अगर सेम इनपुट दिया 2 + 2 इज ऑलवेज 4। बट डेटा साइंस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले सकते हो वेदर प्रेडिक्शन। And आज वेदर अलग है, कल अलग हो सकता है। सो वेदर प्रेडिक्शन में वेरी, so we can say that data science is data driven, right, and uncertain, probabilistic, while software engineering is rule based and certain, right? This is very important. Next, box plot and outlier detection, ये सब हमारा statistics के अंदर आते हैं। Statistics that you need to know for data science study, and we use this type of statistics every day in data science, various problems, right? Now, box plot and outlier detection. Box plot kya hai? Box plot, also called as box and whisker plot, is a graphical method used in statistics and data mining to summarize data distribution and detect outliers. मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपको आउटलायर डिटेक्ट करने में मदद करता है। आउटलायर मींस एक्सट्रीम वैल्यूज। इट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू 4 पार्ट्स using quartiles, making it very useful for understanding spread, central tendency and abnormal values. तो इसमें आपको क्या करते हैं, data set, this data, whatever the data set you have, data you have, that has been divided into 4 parts. ओके, तो क्या क्या है 4 पार्ट सबका? जो क्वार्टाइल्स हैं, राइट, मीन मैक्स मीडियन है। Q1 is the first quartile, that is 25% of the data below that value. Okay. Q2 is the median, 50% of data below this value. मतलब Q1 क्या है, 25% जो डेटा सेट का डेटा होगा उससे नीचे रहेगा, उससे कम होगा। ठीक है। Q2 क्या होगा, मीडियन होगा। तो 50% of the data below this value, and Q3 is the third quartile, that is 75% of the data below this value. 25% डेटा इसके नीचे है, मतलब इसके नीचे नहीं बोलना चाहिए, इसके कम है, इससे कम है। 50% डेटा इससे कम है Q2 से, एंड 75% डेटा इससे कम है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है IQR। क्या बोला मैंने? IQR। IQR माने हो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और IQR इज इक्वल टू ये जो Q3 है 75, इसका 75% ऑफ डेटा जिससे बिलो है, और Q1 है जो 25% ऑफ डेटा बिलो है, इसको माइनस करते हैं। मतलब Q3 माइनस Q1 को हम बोलते हैं क्या? आपका IQR, Q3 माइनस Q1। ठीक है।
Now, outlier detection boundaries box plot detects outliers using the rules like lower boundary है Q1 minus 1.5 into IQR, and you already got it that upper boundary क्या होगा, जो QT है QT से ऊपर, लोअर बाउंड्री Q1 से कम कितना रेंज तक, और अपर बाउंड्री Q3 से ज्यादा कितना रेंज, तो लोअर बाउंड्री होगा Q1 minus 1.5 into IQR. IQR is nothing but QT minus Q1, and upper boundary होगा Q3 plus 1.5 into IQR. ओके, अब इससे नीचे और इससे कम होगा, लोअर से कम होगा तो वो आउटलायर कहलाएगा, ये अपर से ज्यादा होगा तो आउटलायर कहलाएगा। तो पीछे बोलता हूँ क्यू क्या बोलते हैं, IQR is equal to QT minus Q1, and lower is equal to Q1 minus 1.5 into IQR, and QT is equal to QT मतलब upper is equal to QT plus 1.5 into IQR. I hope it is clear. So any value between below lower boundary is outlier, and any value above upper boundary is outlier. So values inside the range is the normal data. Now आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने तो अपर लोड, बट क्यों 1.5 IQR, why 1.5 IQR? Because it is a standard statistical rule. We call it two-case rule. Okay, two-case rule. And it captures extreme but not all rare values, and it balances sensitivity and stability. So 1.5 IQR as per the two-case rule, which captures extreme but not all the rare values, and balances the sensitivity and stability. तो आपको क्या करना है, arrange data in ascending order. You need to find Q1. Q1 is the value below, मतलब 25% of data below it. Q2 is the median value, 50% of the data below it, and Q3 is the value, 75% of the data below it. IQR is equal to QT minus Q1. Then we need to calculate lower. Lower is equal to Q1 minus 1.5 IQR, and upper is equal to QT plus 1.5 IQR. Okay. Then we will try to find out or identify the values outside this range, lower and upper. For example, you can take Q1 10, Q3 20. IQR is 10, 20 minus 10, QT minus 1. Q1 is equal to 20 minus 10, 10. Then lower is equal to क्या होगा आपका? Lower is Q1 minus 1.5 into IQR. This is Q1 10 minus 1.5 into 10. That is what? 15. 10 minus 15, that is minus 5. And upper is QT. QT is 20 plus 1.5 into 10, that is 35. So इन दोनों से अपर मतलब outside boundary का value क्या होगा? Any value less than minus 5 is outlier. Any value greater than 35 is outlier. And values between minus 5 and 35 is the normal data. समझ में आ गया? ये विजुअलिटी होता है आपका। ये Q2 है मीडियन, Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q3 अपर क्वार्टाइल। ये व्हिस्कर रहता है, इसलिए इसको बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बोलते हैं, व्हिस्कर। ठीक है। And then this is minimum, it's maximum, and outside this what? Outlier. Similarly आप बोल सकते हो minimum, whisker, whisker, maximum, lower quartile, median, upper quartile, interquartile range. Interquartile range IQR is what? QT minus Q1. ठीक है, so फिर से रिपीट कर देता हूँ। Q1 25% of data below it, median that is Q2 50% of the data below it, QT 75% of the data below it, IQR is equal to QT minus Q1, minimum means lower is equal to Q1 minus 1.5 into IQR interquartile range, and maximum that is upper QT plus 1.5 into IQR. Okay, very good. Real life example में salary data आप ले सकते हो. Most of the salaries say 20,000 to 80,000, but CEO salary is like this mass, say 10 lakh. So CEO salary becomes an outlier.
इट इज सिंपल एडवांटेज में बोल सकते हो, इट इज सिंपल visual method works well for large data set, detects extreme values effectively, but does not assume that normal distribution. Limitation is that may misclassify extreme but valid data, only considers quartile, not full distribution, sensitive to skewed data set. ये normal distribution मान के चलते हैं, अगर skewed होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, बॉक्स प्लॉट के लिए. सो हम बोल सकते हैं सामान्य में कि बॉक्स प्लॉट इज ए व्हाट is a static, powerful statistical tool that uses quartiles and IQR to detect outliers. Any data point outside the lower and upper boundaries is considered as an extreme value, widely used in data preprocessing and exploratory data analysis. ठीक है. Next, median of group data. In real life situation, data is often given in the form of group frequency distributions like class interval in a histogram rather than exact individual values. In such cases, we cannot directly find the median. Okay, so we use a method known as interpolation to estimate the median. तो रियल लाइफ सिचुएशन में आपका डेटा जो होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म जैसे आप हिस्टोग्राम में देखें. तो इसमें ना मीडियन कैलकुलेट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसलिए हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं. अब ग्रुप डेटा में मीडियन का क्या मीनिंग है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. हम सब जानते हैं, राइट? 50% ऑफ डाटा lies below median and 50% of data lies above median. But in group data, exact values are unknown. हम exact value नहीं जानते. So we have to estimate it. Formula क्या होता है? Formula for median for group data, माने interval based data. L plus n by 2 minus CF by F into H. L माने lower boundary of the median class. N माने total frequency, sum of all observations. CF means cumulative frequency of for median class. F is the frequency of median class and H is the class width. एक बार फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. L plus n by 2 minus CF by F cross H. Now, concept important. Why interpolation use? In group data, we know only the frequency ranges, exact values inside the class intervals are unknown. So we assume that values are uniformly distributed inside the class, estimate the median using इंटरपोलेशन. आप कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है इसका? पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फाइंड टोटल फ्रीक्वेंसी n. We will calculate n by 2, then find the class where cumulative frequency crosses n by 2. That is median class. Right? We have to identify L, that is lower boundary, right? CF, cumulative frequency before median class, and then small f, that is frequency of median class, and h, that is the class width, that is size of the interval. Got it? Then ये formula में put कर दोगे. This is the formula, right? Then compute the median. Example ले लेते हैं, ठीक है? Class interval and frequency. 0 to 10 के 5 है, 10 to 20 का 8 है, 20 का 20 to 30, ये सब इंटरवल है, समझ में आ रही है आप लोगों को. 20 to 30 12 है, 30 to 40 5 है. So सबसे ज्यादा इसमें है, राइट? आप टोटल फ्रीक्वेंसी आप 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 5 30, n by 2 क्या होगा? 30 by 2 15. मीडियन क्लास आपका क्यूमुलेटिव को देखना पड़ेगा. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 25 contains 15. ये समझ में आ गया ना? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ये क्यूमुलेटिव मतलब एक के साथ एक हम क्या करके आ रहे हैं? जोड़ के आ रहे हैं, ठीक है. 5 प्लस 8 13, राइट? कहाँ गया? 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, लाइक दैट. और इसमें 15 आ जाता है, तो मीडियन क्लास 20 to 30 में आ जाए, क्योंकि 15 हमारा मीडियन ये मिला था ना n by 2, और वो आ गया है 20 to 30 में, ठीक है. तो वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर दिया, लोअर 20 है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है, ठीक है. ये पहुंचने से पहले जो वाला है उसको हम बोलते हैं. देन f 12 है, राइट? 20 30 का क्या है? f 12 है. f
आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास था। एंड देन आपका एच है 10। 10 10 के ले रहे हैं ना, 0 to 10, 10 to 23। तो ये सब पुट कर दो। L+n/2 माइनस सी एफ बाई एफ प्लस n to h 20 + 15। ये क्या था, n/2 15, CF 13 divided by 12 into 10, 12 plus 2 into divided by 12। तो अल्टीमेटली आपको 20 + 1 दैट इज 21.67 मिल जाएगा। ठीक है। सो ये होगा ग्रुप डेटा सेट के लिए आपका मीडियन, राइट। So it is an estimate. You cannot directly say, but that's an estimated central value. Real life में you can say exam score analysis for group marks, salary ranges, population data. If salaries are given in ranges, median helps us to find a middle income group. Works well when the raw data is unavailable, easy to compute from histogram data, good approximation of central tendency. लिमिटेशन यह है कि ये एज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्लास, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट ओनली एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है। So the median of group data is calculated using interpolation because exact values are not known. It provides a reliable estimate of the central values, right? And using class intervals and cumulative frequencies and making it very useful for histogram based data set. Formula एक बार फिर से याद रख लेना। L+n/2 minus CF divided by F cross H, L lower boundary and total frequencies, right? And CF cumulative frequency before the median class divided by F is the median class frequency and H is the width। जो हमने अभी अभी निकाला आपका इस वाले एग्जाम्पल के लिए, क्यूमुलेटिव 5+8, 13+12, 25, 25 में ये आ रहे हैं 12, तो ये हो गया मीडियन। मीडियन से पहले आपका 8। तो ऐसे हमने वैल्यूज निकाल लिया, राइट, क्यूमुलेटिव निकाल लिया, LCF FH निकाल के लास्ट में फॉर्मूला में हमने भरा। सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।